Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to study about flavorings and colors that are used in carbonated soft drinks. So in the previous lecture we have discussed about the kind of preservatives that are used in beverage industries, and we have seen what are the advantages of using preservatives. So in brief, if I tell ki what are preservatives, so preservatives are the substances that increases the shelf life of the product by inhibiting the growth of microorganism. So in this lecture we will going to study about the flavorings and colors that are used in carbonated soft drinks. So let's get started with the topic. So flavorings are the substances used to impart taste and or smell to food. It is a flavor of the drink that provides not only a generic identity but also its unique character. A flavoring consists of a mixture of aromatic substance carefully balanced to convey the right message to the sensory receptor of the consumer. The preparation of such a mixture is a serious matter. The flavorist, like the perfumer, must be well versed in the technique, creative and able to translate ideas into a practical product. Although it is often difficult for the consumer to describe taste, the flavorist has no such limitation. So, फ्लेवरिंग क्या है? फ्लेवरिंग एक तरीके का सब्सटेंस है जो किसी भी पर्टिकुलर बेवरेज को या किसी भी पर्टिकुलर फूड को टेस्ट और स्मेल इम्पार्ट कराता है, प्रोवाइड कराता है. ये जो फ्लेवर है किसी भी ड्रिंक का, ये उसको एक यूनिक कैरेक्टर देता है. ठीक है, जो फ्लेवर है इसमें मिक्सचर है ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस का, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं. सिमिलरली अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक बॉटल माज़ा की है और एक बॉटल थम्स अप की है और एक बॉटल आपकी मिरिंडा की है. तो जब भी आप हर एक बॉटल से अगर एक सिप लेंगे तो यू कैन ईजली आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ फ्लेवर इज़ इम्पार्टेड इन दैट पर्टिकुलर बेवरेज. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माज़ा से एक सिप लेंगे तो समझ में आता है कि यस, माज़ा हैज़ मैंगो फ्लेवर, स्प्राइट हैज़ सम मिंट फ्लेवर. सिमिलर केस इज़ विद मिरिंडा, इट हैज़ सम ऑरेंज फ्लेवर. तो इससे आपने ईज़िली आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्टिकुलर बेवरेज में किस टाइप की फ्लेवर्स हम लोगों ने यूज़ किया है या कौन से टाइप का फ्लेवर यूज़ किया है. तो दिस इज़ अबाउट फ्लेवरिंग. नाउ लेट्स मूव टू flavorings and legislation. Most food ingredients have been well investigated in terms of use and effect, categorized and registered on a permitted list as appropriate to local legislation. Flavorings, however, by virtue of their complexity, have always existed as a separate group. Distinction is made under various systems as whether the flavorings are of natural origin. So this follows adoption by UN Food and Agriculture Organization, that is FAO, WHO Food Standard Program, and the Codex Alimentarius Commission of a proposal put forward by International Organization of the Flavor Industry, that is IOFI, to divide the flavoring substance into three categories. The first category is natural flavor and natural flavoring substance. Second is natural identical flavoring substance, and third is artificial flavoring substance. So फ्लेवर्स को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लेवर इंडस्ट्रीज, फ्लेवर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है.
on the basis of whether they are natural or whether they are artificial. So the first one is natural flavors and natural flavoring substances. Second is natural identical flavoring substance, and the last one is artificial flavoring substances. Now the first one is natural flavors and natural flavoring substances. What are these? So they are preparation and a single substance acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical process from vegetable and sometimes animals. Raw materials either in their natural state or processed for human consumption. Now comes the natural identical flavoring substances. So these are the substances that are chemically isolated from aromatic raw material or obtained synthetically. They are chemical identical to substance present in natural product intended for human consumption, whether processed or not. So natural identical flavor substance हम लोगों ने कहाँ से isolate किया? We have isolated it from sometimes aromatic raw materials or obtained by synthetically. So sometimes they are present in natural product and they are okay for human consumption. Now comes the artificial flavoring substances. So artificial flavoring substances are for the purpose of Codex Alimentarius, those substances which have not yet been identified in natural product intended for human consumption, whether processed or not. They are hence made available via synthesis. So since the name suggests कि artificial flavoring substance है, तो ये natural products से हमें नहीं मिलते हैं. So they are available via synthesis. Now comes flavoring in application. Flavorings for the soft drinks are of two types: water miscible and water dispersible. Water miscible flavorings are formulated to dissolve easily in water, forming a clear bright solution at dosage usually in the region of 0.1%. They are typically contain mainly oxygenated highly polar compound. Water dispersible flavorings are sticky, speaking, insoluble, including in their makeup relatively non-polar oil phase, usually citrus, which convey the characteristic Z-like contribution from the peel. This type of flavoring is introduced in the form of an elution, enabling oil-based flavoring substances to be incorporated in a soluble form. So जो फ्लेवरिंग है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ वाटर मिक्सरेबल एंड सेकेंड इज़ वाटर डिस्पर्सिबल. इफ़ आई टॉक अबाउट वाटर मिक्सरेबल फ्लेवरिंग तो ये ईजी इनको जो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं तो दे आर फॉर्मुलेटेड कैसे? बाय डिज़ोल्विंग ईजली इन वाटर. तो ये ईजली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक क्लियर ब्राइट सल्यूशन देते हैं यूजुअली ऑफ 0.1%. और इसमें मेनली ऑक्सीजनेटेड होते हैं, दे आर ऑक्सीजनेटेड. और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली पोलर कंपाउंड्स. इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर डिस्पर्सिबल फ्लेवरिंग तो ये समवॉट इनसॉल्यूबल होते हैं और दे आर नॉन पोलर ऑयल फेज होते हैं, यूजुअली सिट्रस होते हैं और ये जेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीब्यूट करते हैं. और ये जो वाटर डिस्पर्सिबल फ्लेवरिंग होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन या एनेबल ऑयल बेस्ड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस. सो अगर इसका डिफरेंस आ जाए कि व्हाट इज़ वाटर मिक्सरेबल एंड व्हाट इज़ वाटर dispersible, तो water miscible they are easily dissolve in water
whereas जो water dispersible हैं they are not easily dissolved in water. जो water miscible हैं they are polar and they are oxygenated compounds, whereas जो water dispersible हैं they are non-polar or they are non-oxygenated. So now coming to flavoring essence. So जो flavoring essence है is an traditional flavoring product prepared by washing a selected oil blend with an aqueous alcoholic solvent mixture that is 60% ethanol and 40% water. The process is carried out under a cool temperature, for example 5 to 10 degrees centigrade, either batch-wise extraction or by counter current extraction. It is an extraction process in which the aqueous extract phase become the flavoring. So ऑयल फ्लेवरिंग एसेंस क्या है? तो जो फ्लेवरिंग एसेंस है एक ये फ्लेवरिंग ट्रेडिशनल फ्लेवरिंग प्रोडक्ट है जो कि प्रिपेयर हुआ है बाय वॉशिंग. जो ऑयल ब्लेंड है मेनली है सिट्रस ऑयल होता है, इसको हम लोग वॉश करते हैं विद एन एक्वस सोल्यूशन एल्कोहलिक सॉल्वेंट मिक्सचर दैट इज 60% इथेनॉल एंड 40% वाटर. और ये जो प्रोसेस है कूल टेम्परेचर में इसको हम कैरी आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज़ बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. या तो इसमें बैच वाइज एक्सट्रैक्शन होता है या तो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन होता है. जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एक्वस एक्सट्रैक्ट फेज होती है वो क्या बनाती है? बिकम्स फ्लेवरिंग. देन कम्स फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट. So the term flavoring extract is usually applied to extract prepared by solvent extraction of botanical materials. So अब botanical materials क्या होते हैं? वेनिला पॉट्स या जिंजर रूट्स. इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका बोटानिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, मटेरियल है, इसको हम क्या करते हैं? इसको चूज़ करते हैं और चॉप्ड कर देते हैं. चॉप्ड करने के बाद इसको सॉल्वेंट जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ इथेनॉल और वाटर कॉम्बिनेशन का, उसमें जा कर के इसको टुगेदर ब्लेंड करते हैं एंड द जो कंपोनेंट बनता है इसको अलाउ करते हैं टू स्टीप्ड इन द कोल्ड. देन कम्स द कलर. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्लेवर्स क्या होते हैं, what is the use of flavors, why flavors are used. We have seen different kinds and categories of flavors. Now we will going to talk about the color of the colors that are used in carbonated soft drinks. Before starting with the topic, let me tell you जो colors होते हैं ये क्यों यूज़ होते हैं. ये किसी भी प्रोडक्ट की को अपीलिंग बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कोको कोला है या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज और मेरिंडा है, तो कोको कोला हैज़ a somewhat black color and Coca-Cola has somewhat orange in color. So what they are doing, this color is doing, they are just adding attractive appearance to that particular beverage. So let's see what is color. The perception of the color influences the taste or reception of drink, and thus coloring is inevitable controversial. Color which possesses no measurable nutritional value can have no role in food or drink other than that they are deceiving the consumer. Color provides a means of correctly presenting a beverage to consumer so that the perceived organoleptic attribution are correctly ordered in a consequence of the appreciation. So जो color है, so they are not adding any nutritional value. कलर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी बेवरेज में ऐड नहीं करती है. ये सिर्फ उस पर्टिकुलर बेवरेज को, टेक्सचर को, उसकी अपीयरेंस को अपीलिंग बनाती, अट्रैक्टिव बनाती है. ये कलर कोई भी बेवरेज को न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है. व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग? दे आर ओनली प्रोवाइडिंग द एक्चुअल attractive, making the product very attractive or a drink very attractive.
Now, both the quantity and quality of color are of importance, and certain colors will invoke or perhaps complement a particular taste. तो mainly there are few colors. For example, red. जो red color है will flavor the fruitness of soft drinks. For example, black currant, raspberry and strawberry. तो red color क्या provide कर रहा है? They are just adding the fruitness to the soft drinks. किसी भी soft drinks को fruitness provide कर रहा है. इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्लैक करंट, raspberry and strawberries. Then if I talk about the citrus flavor कौन कौन से colors देते हैं? Orange and yellow. So what they are doing? They are providing the some citrus flavor to that particular beverage. Now comes the green and blue. So the green and blue reflects the character of the peppermints, peppermint and cool flavors. Sometimes they are herb-like and balsamic, and the brown align with the heavier flavors. For example, colas and shandies. So green colors हो गया, blue colors हो गया, ये एक सुपरमिंट और कूल फ्लेवर किसी भी ड्रिंक को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपकी कोलाज हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो डेंडलियंस हो गई या बर्डक हो गई, तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द मिंटी फ्लेवर टू दैट पर्टिकुलर ड्रिंक. Similar case is with oranges, similar cases with reds, and similar cases with brown and green color. So this is the end of the lecture. I hope you have understood what are flavors and what are colors. So there are some questions that can be asked in the exams. So let's discuss which type of questions can be asked. So they can ask you in exams about what are flavors, and you have to explain how the flavoring substance are divided into three categories. So you have to explain all these three categories, that is natural flavors and natural flavoring substances, then nature identical flavoring substance, then third is artificial flavoring substance. Even in the MCQs they can ask you about the full form of IOFI, that is International Organization of Flavor Industry. Then they can also ask you about the flavorings in application, what are the different types of flavors that are used in soft drinks. They can ask you about this. And at last in colors they can ask you what is the purpose of color that is there in the beverage industry. And they can ask you about the red, orange and green colors, what are their what flavors are used in beverage industries, and which type of color provide which type of flavor and appearance also. So these are the questions that can be asked in the exams. So I hope you have understood the lecture. Thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach out to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.